Today we are going to do an introductory session on athlete monitoring systems features, which are relevant for all the coaches who will start using the system after some time. Some of you may have been present in the last training session, which was on 28th, but that was primarily addressed for the athletes. आप में से थोड़े कोचेस जो 2-3 दिन पहले ट्रेनिंग हुआ था उसमें शायद आप आए होंगे, मगर वो ट्रेनिंग मैंने ज़्यादातर एथलीट्स के हिसाब से किया था कि एथलीट्स का जो AMS अकाउंट है वो कैसे दिखता है और एथलीट्स ने क्या करना है उसके अंदर. Today's training focuses on coaches and what it means and what kind of features are useful for the coaches. Right now you're looking at the athlete monitoring systems account after you log into the system. In AMS, you can create different teams. So you can see we have created in our demo system 3 teams. One is VK Warriors, other is a boxing team, and another is HPC Athletics, High Performance Center Athletics team, let's say. जो लास्ट ट्रेनिंग सेशन हुआ था उसमें मैंने बॉक्सिंग टीम में एक एथलीट ऐड करके उस एथलीट को वो कैसे सिस्टम दिखेगी वो दिखाया था. अभी मैं आपको एज अ कोच आपको कैसे दिखेगी वो सिस्टम दिखा रहा हूँ. कोचेस को मतलब अगेन जस्ट वन क्लैरिफिकेशन राइट एट द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग इज दैट द डेसिग्नेशन इन AMS एंड योर रियल लाइफ डेसिग्नेशन मे नॉट बी द सेम. मतलब क्या हुआ कि आप रियलिटी में आपका जो एक होता है कि ट्रेनिंग एकेडमी में जो डेसिग्नेशन होता है कोच, असिस्टेंट कोच या सीनियर कोच, और जो AMS में जो डेसिग्नेशंस है वो अलग है, क्योंकि AMS में इट इज मोर लाइक अ रोल. We have tried to give you the roles which are similar sounding but they may not be exactly the same. AMS को आपको जो अलग अलग रोल्स दिखेंगे वो मैं आपको टॉप लेवल पे दिखा रहा हूँ यूजर्स के लेवल पे. तो यूजर्स में मैं सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट जो आपके लिए रेलेवेंट है कि कोच और मैनेजर ये 2 रोल्स है, एंड एडमिन ये 3 में से एक कोई भी रोल आपको दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फीचर्स यू यूज. आपको क्या फीचर्स यूज करने हैं, किस तरह के सेटिंग्स आपने करने हैं, उसके हिसाब से you might become either a coach or a manager or even an admin in athlete monitoring system. Admin matlab, of course, as you can understand, it is not like a real life admin, but for the software that it is, uska jo admin ke features hai जो आपको टॉप लेवल सेटिंग्स दिख रहे हैं. मैं आपको जो टॉप लेवल ब्लू बार है वहां पे ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ. द फोर्थ ऑप्शन इज सेटिंग्स. तो वो जो सेटिंग्स अगर किसी को एक्सेस करने हैं तो वो एडमिन राइट्स होना जरूरी है. तो अगर आप AMS यूज करते हुए आपको लगता है कि मुझे सेटिंग्स एक्सेस करना जरूरी है, देन यू मस्ट गेट एडमिन राइट्स, एंड इवन एज अ कोच यू कैन बी गिवन एडमिन राइट्स इफ रिक्वायर्ड. उसके बाद में कोच एंड मैनेजर में फर्क इतना ही है कि अगर आपको एक टीम के सेटिंग्स चेंज करने हैं, अगर एक टीम के सेटिंग्स आपको यूज करने हैं, देन यू कैन गेट एन एक्सेस एज अ मैनेजर. अदरवाइज आपको अगर सेटिंग से कोई यूज नहीं है और अगर आप सिंपली डेटा सिस्टम के अंदर फीड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, देन यू कैन लाइक यूज द क्रेडेंशियल एज अ कोच. एज अ कोच यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट कि चेंज इन सेटिंग्स आप नहीं कर पाते. तो अगर आपको जरूरत है तो यू कैन बिकम अ मैनेजर और इवन एन एडमिन. सो I'll just quickly try and show you how the system may look different for different people. जैसे अभी आप ये जो देख रहे हो कि मैं एज अ एडमिन आपको दिखा रहा हूँ सिस्टम. कि एडमिन है तो आपको एक या एक से ज्यादा टीम्स भी AMS के अंदर दिख सकती है. जैसे अभी VK वॉरियर्स ये एक टीम है, बॉक्सिंग टीम है एंड HPC एथलेटिक्स ये 3 टीम्स है. इवन विद इन दीज 3 टीम्स इन बॉक्सिंग एज यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड सब टीम्स आल्सो, फॉरवर्ड्स एंड डिफेंस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सब टीम? सब टीम मीन्स एक टीम के हिस्से हो गए. सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल डिफरेंट सब टीम्स आल्सो विद इन अ सिंगल टीम. Suppose you have different requirements, as I said here, let's say in some cases, let's say in games like football, hockey, you can create sub teams for forwards, somebody who's in defense. So depending upon the role of the athletes, if they have a different training program, so a sub team can have a different training program. तो जैसे फॉरवर्ड जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिफेंस अलग दिख रहा है, तो दोनों के अगर आपके अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, then you can put them in different sub teams.
ये भी हो सकता है कि इन द सेम स्पोर्ट सपोज यू हैव अ डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सब जूनियर्स, juniors and elite level players, you can create a sub team. So AMS gives you complete flexibility of creating teams as well as sub teams. uh, in and again you can control the access to the data at each level. So you someone, if you want to give an access only to one team, let's say in boxing, you can give an access to only that particular team. If you want to give an access only to a sub team also, you can do that. So everyone need not get an access to all the data, because usually the concern is the data private? That is a question which everyone asks. हर एक जना यही क्वेश्चन पूछता है कि क्या डेटा सेफ है, क्या ये सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट रहेगा. सो आंसर इज यस. आपके हाथ में है, आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन सा डेटा देख सकता है, कौन कौन सा डेटा नहीं देख सकता. उसके हिसाब से आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो. तो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ. जैसे ये सिस्टम है, डेमो सिस्टम में अलग अलग जैसे यूजर्स है उसकी लिस्ट आपको दिख रही है. जैसे एक यूजर मैं खुद हूँ यहाँ पे. एक जैसे दीपक काबरा करके मैंने अकाउंट बनाया हुआ है. ऑल दीज आर जस्ट डमी अकाउंट्स. रुचि वर्मा करके जैसे एक और ये है. तो उनके राइट साइड में जैसे दिखता है ना, तो जैसे ये विसल का आइकॉन दिखता है दीपक काबरा के सामने, तो विसल आइकॉन शोज दैट ही इज अ कोच. जैसे रुचि वर्मा यहाँ पे जैसे ये आइकॉन है, ये एडमिन का आइकॉन है. सो आई जस्ट लॉग आउट एज this administrator and just I'll try and log in as, let's say, this coach called Agashe Ruchi, and then here I have to enter the password. जब भी इवन एज अ कोच या एडमिन आप लॉग इन करेंगे तो AMS will show you the quick link to the tutorials, so that if you want to do any kind of training, you want to see the tutorials, you can see them right here. Otherwise you can skip. So now as you can see, this user Ruchi has been given an access only to boxing team. जैसे पहले आप एडमिन में 3 टीम्स देख रहे थे, इस यूजर को सिर्फ बॉक्सिंग टीम का एक्सेस है और उसके दोनों सब टीम्स का एक्सेस है. प्लस जो ये राइट साइड में 3 डॉट्स दिखते हैं, वहां पे क्लिक करने के बाद आप देखना कि एज अ मैनेजर आपको ज्यादा एक तरह से टीम सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल रहा है. So if you click on the team settings, you will be able to set this particular team. AMS gives you a lot of options to customize the team. You can decide the activities, the training activities. You can decide what alerts to be generated. Wellness questionnaire आप उसके अंदर fix कर सकते हो. So all these are settings options. So if you want to get an access to the settings, you should be getting an access as at least as a manager. So as you can see again here, these options, just pay attention to it. Team settings option is there. Now I'm again logging out as this particular user, and I'll just try and log in as a coach access. So this is the other user that I mentioned. I'm logging in as Deepak Kabra. And as you can see, this particular user has been given access to only one sub team. I hope the point is clear now. Here, this particular user is getting only access to a particular sub team within even the boxing team. And if I click on the 3 dots on the right hand side, you will see that the team setting option is not there. So if you can just remember this point, it will be very clear. If you need access to team settings, you need access as a manager. And if you need access to more than one team, and like particularly to the top level settings, you need to be given certain credentials as an admin. Of course, you can see the top level settings here as a coach also. So one feature which is available to the coach credential is the exercise options. So why this is so? Because अगर आप अपना ट्रेनिंग प्लान AMS के अंदर डालना चाह रहे हो, डे टू डे ट्रेनिंग एक्टिविटीज अगर डालना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप ओवरऑल सिस्टम में जाके आपके जो भी एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइजेस सिस्टम में ऐड कर सकते हो. तो ये फीचर मैं और बाद में विस्तार में बात करूंगा. बट राइट नाउ एज यू कैन सी, as a coach you will always get an access to the exercise settings. You can create different categories of exercises. You can add different equipments,
and then you can actually add like different exercises in the system. So all these things can be done. So you have the access to the top level settings in which you have the exercise kind of options. So let me just log out and again log in as my main admin account so that I can explore and show all the features to you. So this point is clear that you have an access control in the system. So as a coach, I think I'll just quickly touch upon the feature which we had discussed last time in the first session. Wellness monitoring of the athletes is a very important feature, and I think I'll not spend too much time on that, but just quickly I want to tell you that you can ask your own wellness questions. So if you go to the team's settings, you can go to this feature called wellness questionnaire, and under wellness questionnaire you can actually like modify and change the questions in the system. जो सिस्टम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सिर्फ डिफॉल्ट क्वेश्चंस हैं. वेलनेस मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है कि एथलीट्स को आप डेली उनसे वेलनेस के ऊपर उनके हेल्थ के बारे में फीडबैक ले सकते हो, और ये जो क्वेश्चंस है कि हाउ फ्रेश आर यू फीलिंग टुडे, उसके बाद में हाउ इज योर जनरल हेल्थ, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, तो ये क्वेश्चंस आप चेंज कर सकते हो. आप अपने क्वेश्चंस भी सिस्टम में डाल सकते हो. इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप चेंज कर सकते हो. इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको कुछ भी चीज मेजर करनी है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आपको डेली एथलीट्स में वेट भरना है या रेस्टिंग हार्ट रेट उनसे मेजर करवाना है या जो भी आपको जरूरत है, वो कस्टम फील्ड में आप नाम एंटर कर सकते हो, and then you can capture that particular information. One very important thing you can see here is where the daily Z score is written. Uh, the AMS also gives you a flexibility to choose how you want to create the alerts or how you want to create the monitoring of the custom fields. ये slightly technical area है, so anybody who is technically inclined and if you want to actually tell AMS how you want to monitor these variables, you can do these settings. So whether आपका daily score से alert generate होने हैं, एक Z स्कोर करके आता है, आपके स्पोर्ट्स साइंस में वो पार्ट शायद कवर हो जाएगा कि आपको Z स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है एंड उसको सिस्टम में कैसे इंटरप्रेट करना है, ये आप बता सकते हो सिस्टम में. अदरवाइज सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डिटरमिन एंड डू इट फॉर यू, बट अगर आपको जरूरत है तो आप उस चीज को चेंज कर सकते हो. तो फील फ्री टू यूज दिस पर्टिकुलर फीचर. अगर आप कोई वेरिएबल भी यूज कर रहे हो, कि जैसे आप नीचे देख रहे हो कि इनकेस आपने पोलर या गार्मिन जैसा हार्ट रेट मॉनिटरिंग का वेरिएबल यूज करना है, यू कैन इंटीग्रेट दैट. सो AMS is already integrated with heart rate monitoring devices like Polar and Garmin. Then there are other integrations also available. So you can pull that data automatically in AMS and you can set these parameters over here. So sleep details of athletes can also be pulled into AMS. It's quite possible. As you can see, sleep time, end time, start time, all these parameters can be entered. In case you're not using it, the form can also be very simple. One more point जो मुझे इसमें बताना है कि अगर आपको अगर सपोज एथलीट्स को क्वेश्चंस आपको हिंदी में भेजने हैं या in case you want to use in some other Indian language, you can do that. So जैसे यहाँ पे फटीग लिखा हुआ है, उसको सिंपली आप डिलीट करेंगे. जो भी आपको टाइप करना है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं. अगर आपने गूगल ट्रांसलेट कर दिया, अब जैसे मैं गूगल ट्रांसलेट करता हूँ, गूगल ट्रांसलेट में आप कोई भी लैंग्वेज है उसको आप ये कर सकते हो. जैसे अगर मैं अभी जस्ट एज अ डेमो के लिए इंग्लिश टू हिंदी दिखाता हूँ और फटीग है, फटीग का जैसे थकान ट्रांसलेशन हो गया, तो इसको सिंपली मैं कॉपी कर सकता हूँ और सिस्टम के अंदर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ. तो एज यू कैन सी इट इज वेरी इजी टू डू दैट. सोरनेस है, सोरनेस का मैंने यहाँ से ट्रांसलेशन कर दिया. मुझे जो भी चाहिए, जैसे व्यथा शायद नहीं होगा सही चीज, बट लेट्स से समथिंग एल्स दैट, अभी जैसे मैं टेम्पररी व्यथा ही कॉपी कर रहा हूँ, बट जो सही होगा वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि जो आपको लैंग्वेज चाहिए उस लैंग्वेज में AMS एथलीट्स को क्वेश्चंस आपको भेज सकता है.
और ये जो भी एथलीट्स डेटा भरेंगे वो आपके ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड में आ जाएगा। तो व्हेन आई से डैशबोर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कोचेस कि आपको यहाँ पे क्या होगा कि डेली जो भी आप एक्चुअली एथलीट्स का मॉनिटरिंग कर रहे हो, वो डेली मॉनिटरिंग आपका क्या होगा, यहाँ पे दिख जाएगा। एंड एज यू कैन सी, ये डैशबोर्ड आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने एक वीके वॉरियर्स टीम है, इसका डैशबोर्ड जैसे था, उसके अंदर आपने देखा था कि कुछ और पैरामीटर्स थे। बॉक्सिंग टीम के अंदर आप देख रहे हो कि अब क्या, मैंने सिर्फ मुझे वेट अगर इम्पोर्टेंट मैं चेक कर रहा हूँ डेली एथलीट्स का, और वेलनेस का नंबर क्या है और हेल्थ क्या है, तो मैंने सिर्फ 3 पैरामीटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और जैसे यहाँ पे था कि वेलनेस है, वेट है, हेल्थ है और भी अगर कुछ मुझे ये करना है, अब जैसे नीचे का आप डैशबोर्ड देखेंगे कि इस डैशबोर्ड में मैं अगर एज अ कोच लोड मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, if I'm monitoring my training load of the athletes, you can do that. So the dashboard can be customized, so feel free to customize the dashboard as per your requirements. Again, one word of I would say suggestion is that don't try and put too many things on the parameter, because many times you may be accessing this dashboard or this whole system from a mobile phone. अगर आप मोबाइल फोन से देख रहे तो आप बहुत ज्यादा डेटा डालोगे तो वो क्या होगा, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने के कारण आपको वो डेटा प्रॉपरली दिखेगा नहीं। तो आपको जो जरूरी डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, वो आप डैशबोर्ड में रख सकते हो। बाकी फीचर्स आप सारे जो है वो जैसे ये 3 डॉट्स है, वहां जाके सिस्टम के अंदर स्पेसिफिकली चीजें देख सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए है, जो टॉप लेवल पे कैलेंडर का पार्ट जैसे है, तो वो कैलेंडर फीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैलेंडर का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी ट्रेनिंग एक्टिविटी जो है, लेट मी जस्ट गो टू अदर टीम एंड डू इट। ओके, जैसे मैं बॉक्सिंग टीम में जाके कैलेंडर देख रहा हूँ। कैलेंडर मतलब आपका जो भी ट्रेनिंग एक्टिविटीज है, वो ट्रेनिंग एक्टिविटीज आप सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। AMS gives you this option of entering training activities in the system. Right now there is like just one training, let's say on 28th there is one running session which is there for half an hour, so you will get a snapshot of each training activity which is entered into the system. System will also calculate a training load, which is on the basis of a method called RPE, relative perceived exertion. So it's a scientifically validated method of calculating training load. It is one of the most widely used methods also. Many times people have questions on this, that how it is measuring the load. So the load, I'll again explain that in a short while. But as you can see, the AMS allows you to do the load monitoring. You can see all the training programs in one place. And here at the dashboard itself, every day there is a training session entered. All the data gets plotted on the in the form of a bar chart. Suppose I have to enter some training data. All I have to do is click on the calendar on a particular date. Suppose I'm trying to enter something for today, and there is a training at 6 o'clock in the morning or 7 o'clock in the morning. You have to just click in the on that particular calendar, and this schedule a session option comes up. So you can actually schedule a session. You can select a training activity. So suppose if it's a boxing training, आप बॉक्सिंग के अलग अलग एक्टिविटीज सिस्टम में ऑलरेडी एंटर्ड है। ये जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज है, ये ट्रेनिंग एक्टिविटीज आप खुद भी एंटर कर सकते हो सिस्टम में, कि आपको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज है वो काफी नहीं है, यू कैन चेंज द एक्टिविटीज। अगर आपको लगता है कि कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीजें मिसिंग है, आप उसको सिस्टम में अपने आप ऐड कर सकते हो। अब जैसे ओवरऑल सपोज ये बॉक्सिंग सेशन करके मैं ले रहा हूँ, आई एम नॉट सिलेक्टिंग एनीथिंग, लेट्स से अबाउट हेवी बैक वर्क है, मिड वर्क है, स्पारिंग है, और लेट्स से टुडे आज स्पारिंग प्रैक्टिस है। तो ये आपने ट्रेनिंग एक्टिविटी सिलेक्ट करनी होती है। देन बहुत बेसिक चीजें हैं जिसके अंदर आपका ट्रेनिंग का स्टार्टिंग टाइम है। स्टार्टिंग टाइम सपोज 6:30 का है, टोटल ट्रेनिंग टाइम 2 घंटे का है, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर टाइम। 2 घंटे का ट्रेनिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया।
ये लोकेशन पार्ट इज मैंने सिर्फ डेमो सिस्टम में डाला हुआ है। आपके सिस्टम में अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो कि कहाँ पे एक्चुअली ट्रेनिंग हुआ है। सो सपोज प्लेग्राउंड 1 में है ट्रेनिंग, एंड आपके कौन कौन कोचेस इस ट्रेनिंग में है, इन्वॉल्व है, तो उनके आपको नाम सिलेक्ट करने होते। एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव एज अ कोच योर own assessment of this particular training, that how hard do you think this training will be on a scale of 10. 10 में से आप कितना अंक दोगे एज अ कितना डिफिकल्ट सेशन है, कितना हार्ड सेशन होगा। एज अ कोच आप अपना एस्टिमेट दे सकते हो। आपको लग रहा है कि ओके इट्स 5 ऑन अ स्केल ऑफ 10, यू कैन गिव दैट। इट इज अगेन एज द मेथड सेज, इट इज रिलेटिव, इट इज परसिव्ड एंड एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब कितना हार्डनेस है, एंड परसिव्ड का मतलब यह है कि आपका परसेप्शन है, एज अ कोच आपका एस्टिमेट है। इसमें हर एक जने का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, एंड दैट द सिस्टम अकाउंट्स फॉर दैट कि आपका परसेप्शन मेरा परसेप्शन हर सेम चीज का अलग अलग होगा। तो इसीलिए सिस्टम क्या होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोच के हिसाब से वो ट्रेनिंग लोड कैलकुलेट करेगी, और उसके बाद में आप अपने जो ट्रेनीज है उनसे भी उनका रेटिंग ले सकते हो। तो ट्रेनिंग एक बार आप प्लान करोगे, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में एथलीट्स कैन गिव अ फीडबैक ऑन द ट्रेनिंग, एंड देन यू कैन एक्चुअली सी कि आपका परसेप्शन क्या था, एथलीट्स को कितना वो सेशन हार्ड लगा। एंड देन अभी मैं ये एक्सरसाइज फाइंडर्स के बारे में नहीं बात करूंगा, बट ये क्या है ना कि दिस इज मोर लाइक एन ऑप्शनल थिंग। आपको ट्रेनिंग एक्टिविटी का ये जो फॉर्म है उसको जितना सिंपल रखना है उतना भी रख सकते हो, जितना ज्यादा डेटा कैप्चर करना है उतना भी कर सकते हो। बट एट अ मिनिमम all you have to enter is the date of training, start time of the training, duration of the training. Even this hardness part also, in case you don't like the method, or in case you don't want to use the method right from the start, you can choose to decide it, you can choose to use it later. मतलब क्या है कि जैसे अगर आपको लगता है कि ये हार्ड एंड ये रेटिंग वाला पार्ट मुझे नहीं यूज करना है तो आप उसको यू कैन चूज कि मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ अपने सिस्टम में। मतलब जरूरी नहीं कि हर बार आप इसको करो। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ टाइम कैप्चर करना है और क्या ट्रेनिंग एक्टिविटीज की थी वो कैप्चर करनी है, तो उतना ही भी आप पार्ट सिंपली कर सकते हो। अगर इसके साथ में अगर आपको कुछ भी डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग लिखने हैं तो ये कंटेंट्स एंड कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे फिर से कोई टाइप नहीं करना, क्योंकि बहुत बार साई में या फिर अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में आपके ऑलरेडी कुछ एक ट्रेनिंग एक्टिविटी कैप्चर करने के फॉर्म्स होते हैं जो आप सिस्टम में ऑलरेडी यूज कर रहे हो, वही फॉर्म्स आप ऑफिसेज में सबमिट करते हो। तो आपको लगता है कि मुझे फिर से दोबारा ये कमेंट्स और ये सारा नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आपका जो ट्रेनिंग एक्टिविटी आपने की हुई है और जो ऑलरेडी बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट, उसका सिर्फ एक स्नैप फोटोग्राफ ले सकते हो, और उस फोटोग्राफ को या उस पीडीएफ फाइल को एज अटैचमेंट भी आप कर सकते हो। इट जस्ट ऑप्शन। मैं आपको अलग अलग ऑप्शन समझा रहा हूँ किस तरह से आप सिस्टम को यूज कर सकते हो। तो सिंपल अगर आपको रखना है कि किसको लग रहा है कि नहीं मैं सिर्फ जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसी को यूज करना चाह रहा हूँ, तो आप उसको यूज कर सकते हो और उसको सिर्फ एज अटैचमेंट कर सकते हो। बट एएमएस में यूज करने का फायदा ये होगा उसके कि आपके डिजिटली पूरी एज अ डायरी बन रही है, और आपके ट्रेनिंग के टाइम्स in number of hours are getting captured, and you can get some level of, you will still get some level of analytics, it's possible. But if you actually capture some information, then system can generate a lot of intelligence for you. So let me just add this session. जब भी आप ऐड करते हो तो ये जैसे सेव्ड करके प्रॉम्प्ट आ गया, always look for that prompt. Now I'm closing this, and you can see that on 31st January, which is today, 200 units are being calculated in the system. Okay, so 20th January there was one like training session. 31st there is a training session. Of course, if you're capturing all the training sessions, you will get like a proper view of each and every day. And as you can see on the calendar here, today's training is like shown as a in brief. So this is a playground, and this 2-hour training at 6 o'clock it's being shown. So in this way
it is very easy to capture the training sessions. And I think for coaches, capturing the training session, what training activities were done is very important, and this is where you can use it. Now I'll show you the next step where suppose you want to add more details about this particular training, what was done in this particular training. So initially we have just added like overall training activity, but if you want to add some more details about the training, so let's say there is a evening session and I'm just clicking here and I want to add some more details. So the features which are at the top I have already explained. What you have to add is selecting an activity. So I add, let's say, some kind of physical training also I'm adding. So we are doing some conditioning training also as a part of training. So date is today's date, evening 4 o'clock is the start time. Duration is again, suppose 1.5 hours of training in the evening. And I'm selecting a location, playground. And now staff member is again the same. I'm giving a rating here. How hard will this training be? And let's say I'm saying it's a hard training. Now I want you to pay attention to the exercise finder and workout finder thing. This is a very important feature which is available for the coaches. आपके जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज है, मतलब दो तरह के आप एक्सरसाइजेस सिस्टम में ऐड कर सकते हो. एक तरह का जो एक्सरसाइज है वो ये है कि यू कैन ऐड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस, जो बहुत बार एसएनसी कोचेस जो टीम में है वो भी यूज करेंगे, हो सकता है कोचेस भी यूज करें. तो उसमें क्या है कि आप सिस्टम में एक्सरसाइजेस ऐड कर सकते हो. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 400 मीटर होल बॉडी एक्सरसाइज, देन एडवांस केटलबेल, ऑल्टरनेट हैमर कर्ल. तो ये ऑल एक्सरसाइजेज ऐसे सिस्टम में ऐड है. इस टाइप के आप सिस्टम में एक्सरसाइजेस ऐड कर सकते हो. नाउ ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ही एक्सरसाइज हो. आप कोई भी जैसे बॉक्सिंग के, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो बॉक्सिंग के अलग अलग जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज है वो भी आप सिस्टम में एक तरह से ऐड कर सकते हो. टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, किसी भी स्पोर्ट्स के आपको अगर डिटेल्ड में ट्रेनिंग आपको कैप्चर करना है तो आप उसको एज अ एक्सरसाइज सिस्टम में ऐड कर सकते हो. तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमने स्टार्ट में देखा था एज अ कोच के टॉप लेवल सेटिंग्स में जाके, सो अगेन आई एम क्लिकिंग हियर एंड उसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है एक्सरसाइज सेटिंग्स, तो एक्सरसाइज सेटिंग में आप अपने एक्सरसाइजेस ऐड कर सकते हो. कि जैसे अभी यहाँ पे है और मैं इसमें सपोज ऐड करता हूँ कि एक नई जैसे कैटेगरी ऐड कर दी, और ये कैटेगरी है बॉक्सिंग एक्सरसाइजेस करके. तो ये बॉक्सिंग एक्सरसाइज ऐड कर दिया, मतलब एज अ कैटेगरी मैंने ऐड कर दी. और उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज लाइब्रेरी है उसमें यू कैन जस्ट सिंपली ऐड न्यू. और ये ऐड न्यू करने के बाद में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन बॉक्सिंग, बट मैं जस्ट अगर मुझे ये दिखाना है कि बॉक्सिंग का मुझे क्या ऐड करना है, तो एक सपोज मैं सिंपली एज अ डेमो में बॉक्सिंग एक्सरसाइज 1 करके मैंने ऐड कर दिया. सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक आपकी जो ट्रेनिंग एक्टिविटी है और ये स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट है. तो उसके बाद में यू कैन चूज कि आपको क्या डेटा कैप्चर करना है इस ट्रेनिंग एक्टिविटी के अंदर. क्या इसके मल्टीपल रिपीटेशंस होंगे या सिंगल रिपीटेशन होगा, क्या होगा उसका एग्जैक्टली. तो ये बॉक्सिंग एक्सरसाइज 1 है, अगर मैं मल्टीपल रिपीटेशन करके इसको चूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर आप अलग अलग पैरामीटर्स चूज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट आपको ये पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं. इन केस यू वांट टू यूज देम यू कैन कीप देम, otherwise you can even remove this. I want to capture the repetitions, and suppose it's just the repetition and how much of a rest I'm taking. Then I'm removing the load part, and the tempo is also removed, and then I can save this exercise. So I press submit button and I have added this particular new exercise. So let me just add one more exercise, which is again boxing exercise 2. And again, I'm removing the load and the tempo part. So I can just add this second exercise also. So in that way, you can just add the exercises
it takes one-time effort to add these exercises, but once you add the exercises, they are there with you for, you know, for all the year and like for the time to come. And आपने जो भी exercises add किए हुए, इसको आप सिस्टम में जाके चेक भी कर सकते हो। अब जैसे अभी मैंने ऐड कर दिया, फिल्टर करने के बाद में आई कैन सी बॉक्सिंग एक्सरसाइज 1 and 2 is available. And now when I go to my team and I'm trying to plan a session, so अभी जैसे मैं बॉक्सिंग टीम के अंदर आ गया हूँ, I can come and again try and plan a session. So again I go back to that 4 o'clock training session which I was trying to plan, and here you can see that I'm trying to find out the boxing exercises, and these both exercises are available. So I've just clicked on each exercise and you will see that these exercises get added here. So in that way, you can add your own sport specific exercises in the system. In case you face any problem in this stage, we have a support team and will help you in adding these exercises and capture the data. So don't hesitate to add anything new in the system, because the more you use the system, you will feel more comfortable and it will become specific to you. जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप आपके खुद के एक्सरसाइजेस सिस्टम में ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी अपनी सिस्टम हो जाएगी। आपको डेटा जिस तरह से देखना है ट्रेनिंग प्लान का, वो आप वैसे देख सकते हो और वो आप डेटा कैप्चर भी कर सकते हो। अब जैसे इस तरह से डेटा ऐड करने का क्या फायदा हुआ कि आप एक्चुअली हर एक एक्सरसाइज कितना कितना सेट्स करना चाह रहे हो, कितने सेट्स किए, कितने रिपीटिशंस किए, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे अभी बॉक्सिंग एक्सरसाइज 1 में अगर मैं ये कर रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज का फर्स्ट 10 रिपीटिशंस हुए, उसके बाद में सपोज 2 मिनट रेस्ट दिया था मैंने, तो मैं एक्चुअली देख सकता हूँ कि फर्स्ट सेट में 10 टाइम रिपीटेशंस थे, 2 मिनट का रेस्ट दिया था। देन 1 मोर सेट करना है तो मैंने ये प्लस ग्रीन बटन दबाया एंड उसमें इमीडिएटली एक सेट ऐड हो गया। अगर सेम रिपीटेशंस है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज चेंज कर सकते हो, क्योंकि सेकंड सेट में मैंने 12 के रिपीटेशंस किए थे। देन 1 मोर सेट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो कि थर्ड सेट मैक्सिमम था 15 ये किए, बट हर एक के बाद में 2-2 मिनट का रेस्ट दिया हुआ था। अगर ये फॉर्म भरते हुए आपको अगर कुछ भी और चीज ऐड करनी है तो आप पैरामीटर ऐड कर सकते हो। सिमिलरली देन सेकंड एक्सरसाइज आपने क्या क्या चीज किया, उसके कितने रिपीटेशंस हो गए, क्या रेस्ट था, ये सब आप फिर से सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हो। 3 सेट, तो तीनों सेट सेम हुए, तो उस तरह से क्या होगा कि आप एक्चुअली अलग अलग एक्सरसाइज आपके जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये भी अगर आपको डेटा एंट्री थोड़ा सा मिनिमाइज करना है तो वो भी हो सकता है। जैसे एक्सरसाइज एंड वर्कआउट्स है, तो वर्कआउट का मतलब क्या हुआ कि वर्कआउट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस। आपके यूजुअली क्या होता है कि एक आपका कुछ ना कुछ एक पैटर्न बना रहता है कि यूजुअली मैं पहले पहले वार्म अप कराता हूँ, वार्म अप में ये एक्सरसाइज होते हैं, उसके बाद में मैं कुछ बाकी के एक्सरसाइज कराता हूँ, तो एक आपका पैटर्न बना रहता है कि इस पैटर्न में मैं एक्सरसाइजेस कराता हूँ बच्चों से। तो उस पैटर्न को ही आप एज अ वर्कआउट बना सकते हो कि फर्स्ट एक्सरसाइज 1, देन एक्सरसाइज 2, देन 3, 4, 5, तो वो सीक्वेंस में आप क्या कर सकते हो कि इन एक्सरसाइज को जोड़ के यू कैन एक्चुअली क्रिएट वर्कआउट आउट ऑफ दैट। तो उसमें क्या होगा कि आपको 1 by 1 एक्सरसाइज ऐड करने की जरूरत नहीं है और उसको आप सिर्फ एक क्लिक में योर एंटायर वर्कआउट एक्टिविटी विल गेट एडेड टू दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग फॉर्म। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक्चुअली देखेंगे कि यूज करना स्टार्ट करने के बाद में ये बहुत आसान है टू क्रिएट द ट्रेनिंग लाइक प्लान्स, और वो आप फटाफट उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और उसका फायदा ये होगा कि आपका पूरा ट्रेनिंग एक कैलेंडर पे आपका सेव्ड है, और सिर्फ सेव नहीं है, उससे आगे जाके एनालिसिस आपको जो करना है वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी प्री बिल्ट एनालिसिस है। आपका ट्रेनिंग लोड कितना हो रहा है या फिर ट्रेनिंग टाइम कितना हो रहा है, और उससे जो भी ग्राफिक्स है वो भी आपको
पूरा सिस्टम में दिख सकता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। और इसमें जैसे अभी आप लोडिंग स्कीम भी देख रहे, अगर एट सम स्टेज इफ यू फील कि मुझे मतलब इवन आई एम प्लानिंग फॉर लेट्स से 5 वीक्स एट अ टाइम और इवन 7 वीक्स एट अ टाइम, और मुझे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है इसका ट्रेनिंग का लोड, और जो पूरे रिपीटिशंस है मुझे धीरे 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 बढ़ाते जाना है, और उसका मुझे प्री प्लान करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज एनी sports science based training system should allow you to like even give the loading features. So that part is also available. So any one of you who's interested in like going for a systematic loading of the athletes and you want the AMS to help you, it is possible to do that. So in the exercise settings, if we go ahead here, this third particular feature you can see is a loading scheme. So loading scheme, as you know, loading is like week by week how you want to increase the repetitions. You can always do that. So some of these loading schemes which are there in the demo system, as you can see, is they say hypertrophy hai, hypertrophy off season, hypertrophy pre-season. So you can give a name of the loading scheme, and I'm just going to click on this gear icon, and you can see that in the loading scheme it is essentially every week how many sets will be done, so repetitions how they are going to increase from one set to the other, then how this whole load will increase. As you can see, you can go as specific as you want कि कितना लोड होगा हर एक सेट के अंदर, कितना रेस्ट दिया जाएगा, कितना टेम्पो होगा in week 1, then from week 1 what is the difference going to be in week 2, week 3, like that. So you can actually specify as many weeks as you want. So it is like a pre-planned template. ये आपका अपना कस्टमाइज टेम्पलेट है, मतलब AMS आपको सिर्फ ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है टू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स. यू कैन क्रिएट द टेम्पलेट, and then when you are actually planning a session in those 7 weeks, you can just simply click that loading theme, and all the exercises will get automatically, all those numbers will get generated. So you don't have to enter manually each and every number every time you're trying to create a training plan. So this is a very important feature. Again, feel free to explore it initially, or like you can also start using some of the simpler features in the system. You start putting the training plan, and then as you start to do more research, and as you start to start using the loading feature, always you can do that at a later stage. So in that way, this exercise settings are very, very important for the coaches. You can, like as I said, exercise options. Even in exercise options also, you can specify what kind of equipment you're using. You can also specify the exercises that they are going to be level 1, level 2, level 3. So in terms of difficulty, you can define the levels. You can also define the period of your training activities or exercises, specific for off season, pre-season, in season, tournament time, or some exercises could be year round exercises, and for rehab. And also these parameters. तो parameters मतलब क्या है कि आपको हर एक एक्सरसाइज के बारे में क्या डेटा कैप्चर करना है सिस्टम में, वो पैरामीटर्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो. रेपिटेशन, लोड्स, ये जो टॉप के जैसे ये 4 एंड लाइक अराउंड 9 पैरामीटर्स जो है ये बाय डिफॉल्ट है, ये आपको मिलेंगे ऑटोमेटिकली, बट you can add your own parameters as well, like frequency, RP, anything like that. So you can add your own parameters also in the system and save it. And how do you want, so what is the unit of measurement of that parameter, that can also be defined. तो जैसे आपका ट्रेनिंग चल रहे होंगे, बाकी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के ट्रेनिंग है या स्पोर्ट्स साइंस के है, सो आपको कोई भी आइडिया इम्प्लीमेंट करना है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है AMS के अंदर टू go and create those exercises, create these parameters, and as I said, even the loading scheme, and for like creating proper workout templates. So this is a feature. What happens when you create a training plan like this
इज दैट जैसे आपने कैलेंडर में कोई ट्रेनिंग प्लान ऐसे अगर इस टाइप से डाला हुआ है, तो क्या होता है कि ये ट्रेनिंग प्लान एथलीट्स के मोबाइल में उनको ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा. So as soon as you enter a training plan here, the same training will, like the same calendar will be available for the athletes in their mobile phone. So the athletes can know beforehand what training you're planning to do, and in case you want to take a feedback from the athletes from the training in terms of anything, so you can actually like modify your training form and get a feedback. So one feedback of course is on training load. So athletes say you can get a feedback from the athletes. So let me just quickly show you. ओके, सो दिस इज आपकी जैसे टीम है, उसके अंदर अगर आपको ट्रेनिंग एक्टिविटीज एंड क्या क्या ट्रेनिंग प्लान्स है वो अगर देखने हैं टीम के, तो जैसे कैलेंडर फीचर में जाने के बाद में जैसे ये ट्रेनिंग है, once I click on this particular training plan, अब जैसे अभी इस टीम में सिर्फ एक ही एथलीट है, जब जब आप एज अ कोच ट्रेनिंग ऐड करोगे कैलेंडर के अंदर, तो यू विल सी दैट द ट्रेनिंग जब तक कंप्लीट नहीं है तो तब तक ये ऑरेंज कलर में दिखता रहेगा, ऑरेंज ये जो बार है. इफ आई क्लिक ऑन इट, तो आप एथलीट का फीडबैक आइदर एथलीट्स कैन गिव इट देमसेल्व्स, या अगर कभी कभी क्या होता है कि एथलीट इज नॉट एबल टू डू इट, तब एज अ कोच भी आप उनसे फीडबैक लेके वो सिस्टम के अंदर डाल सकते हो. तो अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि ओके, जैसे 6:30 बजे का आज का ट्रेनिंग था और ये मुझे कंप्लीट हुआ है और उससे रिलेटेड मुझे डेटा सिस्टम में डालना है. तो ड्यूरेशन जैसे 2 घंटे का था, हाउ हार्ड वाज इट, और अगर एथलीट बोलता है कि सपोज एज अ एथलीट मेरा फीडबैक है कि नहीं, मेरा रेटिंग 7 है सिस्टम में, एंड डिड यू एंजॉय इट, यस आई रियली एंजॉयड द ट्रेनिंग, ये मेरा फीडबैक है, एंड देन आई सेव्ड इट. तब आप जैसे देखेंगे कि क्या हुआ, ये ग्रीन बटन जैसे पहले ऑरेंज था, ये अब ग्रीन दिखना स्टार्ट हुआ. इसका मतलब क्या हुआ है कि ये ट्रेनिंग इज मार्क्ड एज कंप्लीट, और ये सेशन सेव हो चुका है एज अ completed session. Then you please pay attention to the summary over here. So the training was in playground 1, sparring boxing. It was for the forwards team. 6:30 से 8:30 तक ट्रेनिंग था. कोच का नाम यहाँ पे दिखेगा. एक ही एथलीट था, एक में से एक एथलीट है. आरपीई आरपीई जो प्लान थी वो 5 थी, एंड एक्चुअल रिपोर्टेड जो आरपीई है वो 7 है, एंड जो ट्रेनिंग लोड सिस्टम ने कैलकुलेट किया हुआ है वो है कि प्लान लोड 600 यूनिट्स था, वो एक्चुअल 840 रिपोर्ट हुआ है. सो इन दैट वे यू गेट अ समरी. लोड इज सिंपली ट्रेनिंग टाइम इन मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय आरपीई. ट्रेनिंग टाइम इन मिनट्स, जैसे 2 घंटे ट्रेनिंग था, मतलब 120 मिनट्स ऑफ ट्रेनिंग है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 5 600 होता है. सो वो आपका प्लान लोड 600 था, बट एक्चुअली जो परसीव्ड लोड है, प्लेयर्स को लगा कि नहीं हार्ड सेशन था ये ज्यादा, तो 840 है. इसका फायदा क्या होता है कि प्लेयर से फीडबैक लेने का, वो ये है कि बहुत बार एज अ कोच हम अपने परसेप्शन से जाते हैं, बट आपके साथ में सपोज 20 एथलीट्स हैं, 20 एथलीट्स की हर एक की अलग अलग ट्रेनिंग की एबिलिटी है, उनका फिटनेस लेवल अलग है, उनकी रिकवरी अलग है. तो सेम सेट ऑफ एक्सरसाइज करने के बाद में हर एक एथलीट का जो थकान है, द टायर्डनेस दे फील इज गोइंग टू बी डिफरेंट. हर एक का अपना अपना अलग अलग थकान होगी. तो ये जो आपका सबका प्लान लोड 600 रहेगा, बट सबका जो रिपोर्टेड लोड रहेगा वो अलग अलग रहेगा. उससे आपको एज अ कोच फीडबैक मिल रहा है हर एक एथलीट से कि कौन ज्यादा थक रहा है सेम एक्सरसाइज करके. तो उसके हिसाब से अगर आपको इंडिविजुअलाइज कुछ ट्रेनिंग में चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हो. आप एथलीट से एक तरह से बात कर सकते हो कि कौन सा एक्सरसाइज का पार्ट ज्यादा थकान वाला लगा, एंड देन जो एथलीट ज्यादा थका हुआ है, देन यू कैन चेक हिज वेलनेस मॉनिटरिंग लॉग्स फॉर द नेक्स्ट डे. इज ही रिकवर्ड प्रॉपर्ली, is he like reporting any
फटीग और सोरनेस इन द मसल्स, उसको मतलब नेक्स्ट डे की रिकवरी कितनी है उसको आज के थकान के बाद में, तो उसके हिसाब से तो फिर यू कैन चेंज द ट्रेनिंग प्लान इंडिविजुअली ऑल्सो। तो एएमएस में जैसे है कि आप यहाँ पे कोई ट्रेनिंग प्लान बनाया हुआ है तो आप सेम प्लान पहले बन जाएगा सबके लिए, बट उसमें से अगर सर्टेन एथलीट्स के लिए थोड़ा सा चेंज करता है इंडिविजुअली तो आप वो इंडिविजुअली कर सकते हो। The whole purpose of doing this individualization or taking a feedback or calculating the training load is to avoid injuries. बहुत बार क्योंकि एथलीट्स की इंजुरीज है, जो करंट प्रिवेलिंग व्यू है कि इंजुरीज आर अवॉइडेबल, इंजुरीज आर हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ two reasons. One is either there is a significant increase in the training load from week to week, एक वीक से नेक्स्ट वीक में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लोड में इंक्रीज होता है तब भी इंजरीज होती है, या ट्रेनिंग लोड एकदम कम हुआ और उसके बाद में फिर से ज्यादा हुआ, मतलब फ्लक्चुएशन के कारण इंजरीज ज्यादा हो जाती है। एएमएस आपको ये जो ट्रेनिंग लोड की फ्लक्चुएशंस है उसके ऊपर भी क्या होगा, आपको थोड़ा सा आपको मतलब अलर्ट्स जनरेट करके दे देगा। अभी जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ वेट एंड वेलनेस रखा है, आई जस्ट क्विकली चेंज द डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे अगर लोड मॉनिटरिंग करना है तो ये रेडीनेस डैशबोर्ड है और उसका मुझे यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे ये वीक टू वीक लोड एंड ACWR लोड, ये जो दो पैरामीटर्स है, ये दो पैरामीटर्स में इनेबल करता हूँ। एक्यूट टू ACWR मतलब एक्यूट टू क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो। एक्यूट टू क्रॉनिक मतलब हुआ कि करंट वीक वर्सेस एवरेज ऑफ लास्ट 4 वीक्स। जो क्रॉनिक जिसको बोलते हैं, क्रॉनिक मतलब लास्ट 4 वीक्स का क्या एवरेज चल रहा है, और एक्यूट मतलब करंट वीक का क्या लोड चल रहा है। इसका रेशियो से आपको पता चलता है कि बेसलाइन क्या है 4 हफ्ते की और इस वीक में कितना ज्यादा चेंज हुआ। एंड नेक्स्ट जो पैरामीटर में जो दिखा रहा हूँ वीक टू वीक लोड, मतलब लास्ट वीक और इस वीक का कंपैरिजन मुझे करना है, तो आप इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हो। ट्रेनिंग में आपको डैशबोर्ड में और पैरामीटर्स है जो आप देख सकते हो कि मोनोटोनी इन ट्रेनिंग, मतलब अगर ट्रेनिंग एक ही जैसा बार बार होते जा रहा है तब भी एथलीट्स एक तरह से बोर्डम भी आता है और फटीग भी बनना स्टार्ट होता है। तो आपका अगर ट्रेनिंग की एक्टिविटीज चेंज नहीं हो रही तब भी सिस्टम आपको मोनोटोनी का अलर्ट जनरेट कर देगा। एंजॉयमेंट का पार्ट है, और अगर जो भी कोई पैरामीटर आप ऐड करोगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि काफी सारी चीजें, अगर आपने कोई असेसमेंट्स किए हुए, क्योंकि बहुत बार एज अ कोच आप असेसमेंट्स करते हो, फिटनेस टेस्ट्स करते हो, तो वो फिटनेस टेस्ट भी एएमएस के अंदर ऐड हो सकते हैं, तो वो भी आप एक तरह से इसके अंदर डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हो। तो जैसे आपने देखा मैंने अभी जब फीचर्स चेंज कर दिए तो यू कैन इमीडिएटली सी कि ACWR ड्यूरेशन एंड वीक टू वीक ड्यूरेशन, इसके ऊपर अलर्ट। अभी क्या हुआ है कि लास्ट वीक में मैंने ऑफकोर्स डेमो सिस्टम में ट्रेनिंग डेटा डाला नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में उसने ऑलरेडी अलर्ट जनरेट कर दिया। अलर्ट में आप देखोगे कि एक्यूट टू क्रॉनिक वर्कलोड रेशो ये जो है कि ज्यादा हुआ है ट्रेनिंग, क्योंकि पहले वीक में था नहीं ट्रेनिंग, बट यूजुअली ये जो रेशोज है वो ये है कि अगर आपका ट्रेनिंग लोड मतलब यूजुअली 1.2 से ऊपर जाता है तो ये आपको सिस्टम अलर्ट आपको रिपोर्ट कर देगी। एंड यू कैन, एज यू कैन सी हियर, यू कैन एक्चुअली सी द नंबर्स कि वीक टू वीक कितना चेंजेस हुए हैं, और you can actually see the training duration itself. Either it can be a duration or it can be a ratio. You can choose what you want to report. So I think I have covered the most important features that you will be using as a coach, which is about training exercises, training activities, training plans, and monitoring of this dashboard. The last feature which I wanted to show you is कि जो आप टाइम टू टाइम एथलीट्स के असेसमेंट्स करते हो, वो असेसमेंट्स भी आप सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हो। तो जो डेमो सिस्टम में जो मैंने असेसमेंट ऐड किया हुआ है मैं वो क्विकली दिखाता हूँ कि असेसमेंट्स 4th ऑप्शन फ्रॉम द टॉप, उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। एंड यू कैन
add your own assessment battery also. जैसे मैंने अभी बॉक्सिंग का सपोज क्वार्टरली असेसमेंट ऑफ बॉक्सिंग डाली हुई है, एंड 2 क्वार्टर्स का असेसमेंट है, एक जुलाई टू दिसंबर सितंबर क्वार्टर है, एक अक्टूबर टू दिसंबर के मेरे क्वार्टर है, और उसके अंदर मुझे अलग अलग तरह के रिपोर्ट दिख सकते हैं कि इंडिविजुअल का प्रोफाइल दिख सकता है, टीम का प्रोफाइल दिख सकता है, रैंकिंग्स दिख सकते हैं. सो ऑल द डेटा कैन बी इजीली विजुअलाइज लाइक दिस. तो जैसे एक डेमो एथलीट है, इसके मुझे बेसिक पैरामीटर्स ऑफ कोर्स हाइट वेट वगैरह है, बट जैसे 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, देन अदर एक्सरसाइजेस जैसे कि 800 मीटर रन वाला टेस्ट है, तो उसके पहले क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स थे, सेकंड क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे डिटेरियोरेशन है, ये सारी चीजें मुझे दिख सकते हैं. एंड देन यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज इट एज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे उसका एक्चुअली परफॉर्मेंस डाउन हुआ है. ऑल दीज थिंग्स कैन बी एंटर्ड ओवर हियर. अगर आपको सिस्टम में इन असेसमेंट्स में रैंकिंग्स देखने हैं कि मुझे प्रोफाइल नहीं चाहिए, मुझे पूरे टीम के रैंकिंग चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट में फर्स्ट है, किसमें कौन सेकंड है, तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर देख सकते हैं कि जैसे 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट है, तो उसके अंदर who's good, who's like fastest, who's like worse than that, so everything can be seen like this. All right, so असेसमेंट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि आप हर 2-3 महीने में एथलीट्स का असेसमेंट चलता रहता है. आप वो असेसमेंट के रिजल्ट सिस्टम में रख सकते हो, एंड देन इट विल बी लाइक अ परमानेंट डेटा. सिस्टम में जो भी इस टीम को एक्सेस है, उनको वो ये असेसमेंट्स के पार्ट दिख सकते हैं. कोई भी इंपॉर्टेंट असेसमेंट है जिसके रिजल्ट्स आप डैशबोर्ड पे दिखाना चाह रहे हो, तो वो चीज भी संभव है. यू कैन ऑलवेज शो दिस रिजल्ट्स ऑन डैशबोर्ड. So I think with this we have more or less covered important features. I can like just tell you that something else is available. अगर आपको यूज करना है तो वो भी फीचर आप यूज कर सकते हो. असेसमेंट्स के अलावा आप क्वेश्चनएयर्स भी है. अगर आपको किसी भी तरह की क्वेश्चनएयर एथलीट्स को भेजनी है, या फिर इनटेक के समय क्वेश्चनएयर है, तो वो क्वेश्चनएयर भी सिस्टम के अंदर ऐड हो सकते हैं. वो आप क्वेश्चनएयर अगर जरूरत होगी तो उस समय आप फिर से अलग से ट्रेनिंग देख सकते हैं उसका, बट इट्स नॉट अ कोर फीचर, इसलिए मैंने अभी आपको नहीं बताई है. बट क्वेश्चनएयर्स भी है सिस्टम में जो आप यूज कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एएमएस के अंदर आपको कुछ भी जैसे मीडिया रखना है, जैसे एक मीडिया शेयरिंग करके फीचर है, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई ट्रेनिंग मटेरियल है, ट्रेनिंग वीडियोस है, कोई ट्रेनिंग के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स है, तो वो आप एथलीट्स के साथ में आराम से शेयर कर सकते हो. इट्स लाइक अ डिजिटल ऐसे एज अ लॉकर या फिर एज अ स्टोरेज फीचर है, जिसके अंदर डालने के बाद में वो वीडियो या वो इमेजेस या ट्रेनिंग मटेरियल आपके पूरी टीम के साथ में शेयर हो सकता है. आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि सिर्फ एथलीट्स के साथ करना है, कि सिर्फ स्टाफ मेंबर्स के साथ करना है, कि सबके साथ में करना है. सो यू कैन चूज दैट एज वेल. एंड देयर आर लॉट ऑफ लॉग्स, स्टैट्स, असेसमेंट्स, मतलब ये सारे फीचर्स अवेलेबल है चार्ट्स के. मैं पूरे चार्ट्स ये नहीं दिखा रहा हूँ, बट यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन. और इसमें से सिस्टम में से आप एक्सेल शीट में भी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो. अगर आपको कोई एक्सटर्नल कैलकुलेशंस करने, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल. एंड डेटा आल्सो कैन बी एंटर्ड थ्रू एक्सेल शीट्स. सो विद दैट आई विल स्टॉप हियर. अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क. इनकेस अभी नहीं क्वेश्चंस है, अगर बाद में भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. Thank you very much for your attention. In case there are any questions, do let me know. Hello. Hello. Yes, yes. Anji, sir. Good afternoon, sir. I'm Jitinder Singh, cycling coach from Guwahati, Good afternoon, LNIP. sir. Yes, sir. My the lecture is very informative, and I can just ask about the ACWR, acute chronic work ratios. Yeah. So it can help us to be
our training, how our training proceeds. Acute, chronic work ratios help us how our training proceeds and Yes. how it can help us. So Yes. can this feature can help us for the as a graph ratio for comparison of the in between the training. Yes. So I've not shown you all the things, but yes, you can see it as a graph also. So since there is not enough data in my system, you may not be able to clearly see it, but जैसे जो team charts हैं, या फिर when you go and click on the team here, you can go to these training charts, and there you can see it as in details. So it's possible, yes. So you can actually see the ratio, the training part, and in fact you can see it for each and every athlete, not just for the team. For each athlete also you can see what is the, you know, the how much is the training. So suppose I pick up this one particular athlete, then for each athlete you can see there is a wellness part here and this training part. So under the training part for each athlete, these graphs features are available, and once you once there is data, you can actually see the load, what is the planned load, what is the reported load, and all these features can be seen through the chart itself. So yes, Thank you. To answer Yes, your yes, question, thank it you. is possible, sir. Yes. Yes, yes. This is actually this is the very much important feature. Yes. How we can calculate the how our training proceeds during the last month and the how current week and the coming future. How the then the graph shows us the actual training load. Yes, it will actually So show you the load, and it will also yes, like generate an alert if it thinks that the training yes, load is yes. much higher. So, yes, that's why I am asking about this. The second thing is rate of perceived exertion. Yes. You already discussed about the rate of perceived exertion, जिसको हम Yes. Borg's, actually this is known as the Borg scale. Correct. Yes. आप इसके अंदर एक फीचर डाल दीजिए रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन में एक अवर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट 10 years बैक इंट्रोड्यूस द बॉर्ग स्केल उसके Yes. अंदर ये सारा कुछ बॉर्ग स्केल के अंदर ये रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन का सारा विद कलरफुल चार्ट उसने ये शो किया हुआ है कि कैसे कैसे अगर इतना लोड होगा तो उसका ये कलर होगा उसका ये होगा तो ऐसा Yes. होगा. Yes. So Borg scale is help us to be how is our training going on, and Yes. how much exertion is converted in the training. So Right. thank you very much. Lecture is very valuable. Good. Thank you so much, sir, for your feedback. Thank you. Any other participants? Any participants who have any question, please unmute yourself and ask a question directly to Mr. Vaibhav. Sir, may I? Yes, please, please. Sir, good afternoon, Weber. Sir, thank you very much. It was quite an informative lecture. We have interacted earlier also. Sir, I just want to understand about the adding some specific tests for our game. So I was simultaneously, listening to a lecture. I was also practicing AMS, and whatever you have informed, we have already been doing that. The only thing is that all the sports scientists could able to add their test. But here, what I could see that do we need to ask the admin to add the test, or coaches can do that? The assessments part? Yeah. Suppose I have designed yes. a test, which Yes. I feel that it is like normally what happens, there are some standardized tests, which is being used all over the world with some standardized norms. But there are some, coaches made a test, which I personally feel that it is good for me, and I want to customize it and use it for my purpose because it works for me. Yes. So, yes, sir. So that I want to know how to add. For adding those tests, like assessments specifically, you need access as a admin. You need access like that, and you have to go to the top level settings, and you have to come to the assessment settings.
So this is where you have to come. In the assessment settings, you have to go step by step. So one is a, like when you say you want to add a test, for adding the test measures something. So what that something is actually the component. So let's say 20-meter shuttle run, it measures the endurance. So you have to enter the component first. So it is very easy. It's simply, you can see, come to the component part under assessment and just click on add new and type whatever is the new component that you can add the component over here. And then once you add the component, you go to the next step, which is test library, and just simply click on add new. Once you click on add new, this blank form comes up. So this blank form comes up. The test that you want to add, you can just simply type out the name of the test, then specify the unit of the test to add here. Almost all the units are there. In case something is missing or you can't interpret it, just let me know. Then you can select whatever that you are testing and measuring. Is it in decimal system, or is it in minutes and seconds, or feet and inches? So select an appropriate parameter. Then this drop down, you can actually select what parameter you're measuring. So sometimes it can be anthropometric, biochemical. So most of the parameters are already added, but you can, as I showed you just now, you can add your own parameter as you add your own component. तो जैसे आपने टेस्ट का नाम दे दिया, component select कर दिया. Sometimes if required, you can even add a formula also here. So if you want to derive something, and if your test involves using some other test and creating a formula out of it, you can type out even the formula like this. So as you can see in the drop down here, bicep plus tricep plus like this. So you can actually create like a formula here. And then you can also tell AMS how you want to interpret whether the higher raw score is a better result. मतलब जैसे होता है ना कि suppose हम strength measure कर रहे हैं, तो how many kgs I am lifting is a higher the weight lifted is better, so it is higher raw score is better result. But जैसे speed measure करते हैं, so while measuring speed, that you are actually measuring the time, and lesser time is actually a better result. So not higher time is a better result. So you can select yes or no so that AMS will interpret it correctly. By default, usually rest of the things need not be changed, but in case you want to, if you're trying to measure the improvement in the successive results, you can actually see whether smallest worthwhile change. You can see system gives you an option to choose your own thing. So in terms of standard deviation, SD is standard deviation. So it can be as low as 0.1 or up to 2 standard deviation like that. So you can choose your standard deviation. Then you can even customize the graph range also, because this test and those, they will be shown in terms of a graph. So to make the graph look proper or better, you can actually give a range also. But all these things are not again compulsory or mandatory. What is basically important to add is just name of the test, unit, classify it as decimal or this. Component formula is also not important. But one important thing which everyone needs to pay attention, कि जो decimal places part है, so आप जो data enter करोगे, so after the decimal point, how many digits of information you're going to add. So it is whether it's 20.1 or 20.12 like that. So you have to specify the decimal places. Many times जो error आते हैं system में, वो इसलिए आते हैं कि decimal places कम ज्यादा होते हैं. System में आपने 2 रखा है, but आप data भरते हुए कम decimal places enter कर रहे हैं. So in that sense कभी-कभी error आता है. So just be careful about the decimal places. So in this way you can add tests. You can have your own tests, and then you can actually create your own test battery. Test battery is a combination of tests. You can see it here. Anthropometrical is height, weight, BMI, sitting height, arm span, like that. So you combine, actually these are all individual tests. You can combine them into a test battery. So as you asked, sir, you want to have your own tests, you can just add them into the system, create a battery, and
then that battery will be available to you to use it. And then simply you can enter the data from the team. So you have to go to, like, suppose it is in this VK Warriors, any team, it will be the same. The like option will be there. The fourth option is assessments, and go to the assessment, and this new battery that you added to the system will be available to you for use here. So yes, I think whatever, like, your own tried and tested tests you want to enter them into the system, you have to go to the system level settings, add them there, and then you can continue to use them, like, as long as you want. Fine, fine. Thank you very much. So to get this access, I need to, speak to our administrators who have Yes. Yeah. added us in the AMS, Added right? us. Yes. Fine, fine. Thank you very much. Welcome, sir. Anyone else wants to ask? Any other participant? Hi, Vaibhav, Rajesh here. Yes. Yes, sir. Vaibhav, this system is very good, very intelligent system. Good, you have started after a long time. It will going to give a picture of complete picture of the player, you know. Yeah. Yes. My question is that when you are going to implement this system, is immediately or next financial year, or immediately you are going to give the credential for this? I think the system is already given to the tops. So I think, Gopalji, if you can answer that question, So because we have it is already started, there. sir. We have already Achha. started sharing the credentials among all the all the coaches and support staff. Soon you will also get it, sir. Okay, so backend Vaibhav, who will be the backend support? Suppose we have any doubt or the feeling of this some parameter system, so who will be supporting us? So there are two support. Of course, I am there to support, but there is a person called Raju Bhairava in my team. So I think you will get his landline number. So he will always be available for you as a first level of support. So he's very well versed with the system. So Vaibhav, majority of the queries. Vaibhav, Yes, can you share his number on chat so that everyone can note it down? Yeah. I'm just sharing the landline number here. So this is our office landline number, and he is available in this. Okay. So there are some of the our students are there who are not training in NCOE right now. So this credential will go to the non-NCOE coaches also. Hello, Vaibhav. Yeah. I think again it depends on the tops administrators. From AMS perspective, we have no issues. You need not be part of NCOE. Okay, I think this is a tops development athletes and their coaches and their support staff. So it can be anybody. Okay. And what we have done is that, जैसे मैंने start में बताया था कि team and sub teams can be created. So each athlete will be in a separate sub team, and his coaches and his support staff will also get an access only to that sub team, so that there is a complete control over who gets to see that data. So the person need not be in a particular place. They can see the data of a particular athlete only. Good. Thank you so much. Thank you so much for this information. Valuable system and a good PMS monitoring system. Thank you very much, sir, and look forward to helping you in full implementation of the system. Yes. We will be in touch. Yeah. Thank you so much. All right, sir. Then let's stop here. Yes, I think we don't have much questions, so let's close it, right, Vaibhav? Yes, sir. So thank you, Vaibhav, so much for this wonderful session. Thank you all participants for attending this session. Now we will meet tomorrow. The tomorrow session will be on this same topic, AMS features and its practices, but it will be for all scientific staff.
So I will request all scientific staff, if they are attending today's session as well, so be present tomorrow as well, so that you can get the information how to handle the AMS system. So thank you, AMS. Thank you all participants. Goodbye and take care. Thank you. Bye-bye.